guest, and very near to me, Mrs. Renu Hanspal, the principal of Patiala, and respected parents, worthy staff members, near and dear to my heart, my students, a very good evening. A very good evening to all. This evening is a very special evening in the school calendar. As the principal of the school, I am humbled and proud to welcome you all on the annual day celebration. We are celebrating the 20th annual day this year called Sajda 2019, dedicated to the celebration of 550th birth anniversary of Sri Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Foundation Public School is a school with a difference. It believes in excellence, in organizing the things that would reflect what value system for. 20 years of the successful journey of the school is the outcome of the sweat, blood, and a huge investment of the efforts of each stakeholder, whether it is a child, management committee, or even a parent. All worked hard to make this school into this level. Standing tall besides of all these odds and difficulties, GNFPS Mohali is growing and raising the level of excellence in every field of education, whether it is academics or co-curricular activities. We produced even a Mohali non-medical topper this year of the student of class 12th, Sukhneet Kaur, who secured 97.6 marks percentage, and the national player, the Jasleen Kaur, and the district topper of the various games as boxing, hammer throw, and cricket. As you know, the school runs its own academy, whether it is cricket, football, and kabaddi. We also have a musical academy as well, which is already affiliated by Prachin Kala Mandir. And we have given an open invitation to the outsiders as well. If they want, they can enroll themselves and can give the paper in the school for clearing the paper of the Prachin Kala Mandir. GNFPS is a hub of opportunities and learning. It is only possible under the cooperation of the parents, hard work of the teachers, and the supreme guidance of Sardar Pratap Singh Ji and the blessing of Almighty. Today, we had 600 plus students on the stage, and this is the biggest exercise of the management of the human being, the management of resources. We have excellent team of the teachers who worked hard behind the stage to make this event successful. The Sajda 2019, it is an expression of the teaching of Sri Guru Nanak Dev Ji. The 12 basic teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji have been depicted in this events are: honesty is the best policy. There is no better business than serving the poor. Equality, philosophy of selfless service. Eliminate the inner evil. Superstitions and caste divides are not to be favored. God is everywhere. Compassion, the music heals. Finding purpose of life never come to a Persian. These teachings are so relevant in the modern world where every substance of the life is imbalanced. Imbalance in environment, imbalance in relation, and imbalance in a human behavior. It is the need of the hour that we should work hard to build a strong character as well as create a value system which will help a child to stand in front of all the challenges and would provide the sustainable development. I request once again to all my parents and the teachers, help the student, help your child to understand their roots and teach them the values which will make them, him or her, a better human being. Once again, I express my thanks to all of you, all my guests and my parents, students and teachers who spared the precious time and graced this occasion. Thank you very much. I would request to Pratap sir. I would request first of all to Chaman Lal Pawar sir. He would share some of his valuable views among us.
चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल पटियाले तो, प्रिंसिपल मैन गुरु नानक स्कूल चप्परचिड़ी एंड पेरेंट्स, अज इस प्रोग्राम विच डीसी साहब ने आना सी, कुछ रजेवें करके सीएम साहब ने उन्होंने बुला लिया तो उन्होंने स्पैशल किया कि पवार साहब मैं थोड़ा बिजी हो गया, इस करके पहुँच नहीं सकांगा। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साइड तो SDM साहब ने आना सीगा, वो भी बिजी हो गया। प्रोग्राम तुसी काफ़ी लंबे समय तो देख रहे हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जनवरी में CM साहब ने अनाउंस किया सी कि ये सारा साल गुरु नानक देव जी महाराज के गुरपुरब नूं मनाया जाएगा और 12 नवंबर एक बहुत बड़ा दिन होगा। इंज लगता सी कि असी 11 महीने पहला तैयारियां कर रही हाँ, तो पर सानू टाइम का पता नहीं लग्या। 12 नवंबर बहुत जल्द आ गया, जिस दिन बहुत बड़ा ये दिन मनाया जाएगा। स्कूल के स्टाफ ने, प्रिंसिपल मैम ने बहुत बढ़िया मेहनत करके बहुत अच्छी कोरियोग्राफी देखी है, बच्चों के बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। मैं इन्होंने बच्चों को अज की रिफ्रैशमेंट लिए अपनी सैलरी विचों 11,000 रुपया प्रिंसिपल मैडम देना। बहुत अच्छा बच्चे ने परफॉर्म किया। प्रोग्राम बहुत वधिया सी, टाइम बड़ा शॉर्ट होने करके मेरा ख्याल है भी अज सारे पेरेंट्स भी बहुत टाइम की वेट कर रहे होंगे। इस करके मैं प्रिंसिपल मैडम नूं, स्टाफ नूं, इन्हां दे सारे टीचर्स नूं जिन्होंने कोरियोग्राफ की है, उन्होंने इस प्रोग्राम की सक्सैस लिए बहुत बहुत बधाई देना। चेयरमैन साहब नूं बहुत बहुत इन्हां दा भी धन्नवाद करदा जिन्होंने इतना टाइम कट के इस प्रोग्राम सक्सैस किया। थैंक यू वेरी मच। Now I would request our director Sir Pratap Singh ji to please share the words of wisdom. सत्कारयोग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खुशी की गल है कि अज असी बड़े चेचे तौर पर जोड़ा अज का जोड़ा एनुअल डे है वो गुरु नानक देव जी के 550 साला प्रकाश उत्सव में समर्पित कर रहे हैं। जिन्ने भी स्कूल गुरु नानक फाउंडेशन के अधीन चल रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ कि इस साल सारिया एक्टिविटीज़ जड़ियाँ ने, भावें एथलैटिक मीट है, भावें कोई भी एक्टिविटी है, वो गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव में ही समर्पित होवे। वक्-वक् प्रोग्राम जिहड़े ने लिखे गए स्कूलों विच गुरु नानक देव जी के जीवन के नाल आधारित जिहड़ियां उन्हां 4 उदासियां कीतियां, उन्हां नूं बच्चियां ने आप समझ के उन्हां दीयां पेंटिंग लगाईयां, पेंटिंग बनवाइयां और फिर पब्लिक वास्ते वो डिस्पले कीतियां। बच्चों ने आप ही शब्द कीर्तन किया, आप ही बच्चों ने सारे प्रोग्राम जिहड़े ने वो अरेंज करके जो गुरु नानक देव जी दीयां सिखावां सीगियां उन्हां नूं ग्रहण किया। तुसीं भावें गुरु बाबे दीयां साखियां तो बहुत चंगी तरह वाकुफ हो। मैनूं याद है पुराने जमाने च ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਐਸਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ ਕੋ टाइम है ना दादा दादी को टाइम है। तो इस बार ਇਹੋ ਹੀ फैसला किया कि ये ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम है ये गुरु नानक देव जी के जीवन के आधार पर ਜਿਹੜਾ है वो किया जाए। बच्चों ने बहुत वधिया तरीके नाल, बहुत खूब तरीके नाल, वधिया तरीके नाल उन्हां दे वख-वख जीवन के पक्षों तो वख-वख सिक्ख्यावां ते जिवें हर पक्ष जिहड़ा सी गुरु नानक देव जी का, भावें फीमेल फोर्टिसाइड का सी, भावें नशियां नाल सीगा, भावें वातावरण नाल सीगा, भावें धरती नूं बचाउण दा सी, पवन नूं वधिया बनाउण दा सीगा, एनवायरनमेंट नूं स्वच्छ करन दा सीगा।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤੀ ਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਤੁਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਐਂਥਮ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਨੇ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਐਂਥਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਆਰਤੀ 'ਚ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚੋਂ 97.6% ਲੈ ਕੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਦ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਟਾਪਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਟੀਚਰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਜਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, sir. Thank you so much. Now the most awaited moment has come. I'm going to take the privilege to start the prize distribution ceremony. First of all, I proudly call up Miss Sukhneet Kaur. She is the topper in the whole district. Parents, kindly give her a big round of applause. She achieved 97% marks in class +2 non-medical stream. She got 100 on 100 in math subject. Give her a big round of applause, please. Now she is here to receive Panth Ratan Trophy. Give her a big round of applause, parents. The next on list is Gurkaval Kaur, who stood first in medical stream with 85% marks. I repeat, Gurkaval Kaur stood first in medical stream with 85% marks. Gurkaval Kaur. She stood first in the medical stream with 85% marks. Next on list is Simar Kaur. She topped in commerce stream with 92.2% marks.
Congratulations. You are a proud for Guru Nanak Foundation Public School. Kindly keep on clapping. It's the time to motivate our children, parents. Next on list is Babita. She topped in art stream. I repeat, Babita, in art stream. Another feather in the cap, Jagdeep Singh, who achieved 96.4% marks. ਭੰਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਭੰਗੜਾ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣ ਭੰਗੜਾ ਤਮਕ ਜੀ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਜਹਾਨ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਭੰਗੜਾ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂ ਨੱਚਣ ਦਾ ਚਾਹ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਬਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ खुशी मना किकली कली रुपी तक मेरे पीर भी पट्टा मेरे भाई दा पिट्टे मुंह दवाई दा मेरा पेस मेरे दिलदार दा मेरा पेस मेरे दिलदार दा ऋषिया दुनिया अवतार दा मेरा पेस मेरे दिलदार दा मेरा पेस मेरे दिलदार दा करके अज उन्हां दियां गुड्डियां आसमानां विच चढ़ियां होईयां ने नचदे शौकीन मुंडे जुम्मे हस के केड़े शहरों चों बड़ा सवाया कुड़ता वे सानू जावी दस के गलां विच कैंठे कन्नी मुंदरा ते डोले ते तवीत कस के चन्न जाए गब्बरू वे बोल भंगड़े ते लोकी कहने अशके चन्न जाए गब्बरू वे बोल भंगड़े ते लोकी कहने
खुशियां दा सजना वे अज दिन खुशियां दा सजना ओए हंस के मुंडिया करा चक दो फटे अज दिन खुशियां दा सजना वे अज दिन खुशियां दा सजना ओ नहीं सा लोडिया खुशियां दा सजना वे अज दिन खुशियां दा सजना अज दिन खुशियां दा सजना वे अज दिन खुशियां दा सजना आवो रंग में खुशी मनाइए हंसिए नचिए टप्पिए गाइए वेला मुड़ के नहीं लभना हो अज दिन खुशियां दा सजना वे अज दिन खुशियां दा सजना अज दिन खुशियां दा सजना वे अज दिन खुशियां दा सजना यारा नाल महफिल है सजदी यारा दे कहते दिल बैठे ते बड़े प्यार दी ओ यारा नाल महफिल है सजदी यारा दे कहते दिल बैठे ते बड़े प्यार दी हर मुख दे उत्ते खेड़ा कहते आ जांदा जदों इकट्ठे होण दिलदार दी ऐसी कदी सबब नाल मिलदी दिल दी कली खुशी नाल खिलदी वे अपने फर सोनी बजना हो अज दिन खुशियां दा सजना वे अज दिन खुशियां दा सजना अज दिन खुशियां दा सजना वे अज दिन खुशियां दा सजना ओ खच के जवाना करा ओ जीदा रे संतोष सिंह माई वालिया मैं चिड़ी बलौरी कच दी मैं मोरनियां दी भैन मेरे धूड़ियां वर्गे पैर ने हो मेरे धूड़ियां वर्गे पैर मेरे तकले वर्गे नैन वे मैं चिड़ी बलौरी कच दी हो जे तू चिड़ी बलौरी कच दी मैं सोन जड़िया वाच चिट्टे दंद गुलाबी बुल्लियां हो चिट्टे दंद गुलाबी बुल्लियां तू लेके आवी दाज जे तू चिड़ी बलौरी कच दी ओह लेक्चर लाके निकली ओ मैं खड़ा सी यारा पैरी जुत्ती पहुंचे जग में सिर ते चुन्नी सी ओ पैरी जुत्ती पहुंचे जग में सिर ते चुन्नी सी ओह नजरां मिलाणो संगदी नजरां मिलाणो संगदी बई अखां टकियां गुच्ची नाल ओ दसी बई नशिंदर गिल अगे की होया ओ सही गल है भाई ओ नहीं सा मुंडिया टोबिया चक दो करा नचदे टपदे खुशी मनाउंदे बन बन टोलियां विच तेरी जरा गावड़ कुड़ियां पावड़ बोलियां ओ लगदे रेड़े मेले यार विच मार दे मारे मार जाए बैरगले पंजाब दे मारे मार जाए बैरगले पंजाब दे लुटना जिवे लाया से लुट चलिया बाबा बार कर तीन फुट चलिया खुदा विचों फुट जिवे है गलावदा देश दी है शान बंदड़ा पंजाब दा देश दी है शान बंदड़ा पंजाब
ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। 12 ਨਵੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 11,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Now I would request our director Sir Pratap Singh ji to please share the words of wisdom. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲਗਾਈਆਂ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਐਸਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਨਾਨੀ ਨਾਨੀ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ। तो इस वारी ਇਹੋ ਹੀ फैसला किया कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम है ये गुरु नानक देव जी के जीवन के आधार पर जोड़ा है वो किया जाए। बच्चों ने बहुत वधिया तरीके नाल, बहुत खूब तरीके नाल, वधिया तरीके नाल उन्हां दे वख-वख जीवन के पक्षां तो वख-वख सिक्ख्यावां ते जिवें हर पक्ष जिहड़ा सी गुरु नानक देव जी का, भावें वो फीमेल फोर्टिसाइड का सी, भावें नशियां नाल सीगा, भावें वातावरण नाल सीगा, भावें धरती नूं बचाउण दा सी, पवन नूं वधिया बनाउण दा सीगा, एनवायरनमेंट नूं स्वच्छ करन दा सीगा। सारे प्रोग्राम जो गुरु नानक देव दीयां सिक्ख्यावां सीगियां उन्हां ने बड़े चंगे तरीके नाल तुहानूं सारिआं नूं अपनी एक्टिंग द्वारा, कोरियोग्राफी द्वारा वो तुहाडे तक पेश किया। मैनूं विश्वास है कि हो सकदा तुहानूं ये प्रोग्राम जिहड़ा चंगा लगा है। शुरुआत उन्हां बच्चिआं ने बड़ी वधिया मतलब बाबे दा शब्द आरती गा के कीता।
एक बार रविंद्रनाथ नूं किसी ने पूछा कि नैशनल एंथम तुहां लिखा है विश्व एंथम भी लिख दो, तो रविंद्रनाथ ने बड़ा ढुकमा जवाब दिता कि विश्व एंथम जिहड़ा संसार का गाना है वो गुरु नानक बाबा आरती च लिख गए हैं। तो वो जिहड़ा गाने के नाल ही बच्चों ने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया। मैं इको ही तुहाडे चरणों च बेनती करना चाहुंदा है पेरेंट्स दे भी, टीचरां दे भी, सारियां दे, कि इस तो बाद हुण आपां सारियां ने जो अकैडमिक खेत्र है बच्चों का उहदे वल पूरी तवज्जो करनी है। टीचर भी जिहड़ा है ना वो अपना सारा जोर लाउण कि बच्चों की जो अकैडमिक परफॉर्मेंस जिहड़ा आउण वाला टाइम है, जिद्दां पिछले साल साडी नॉन मैडिकल विचों 97.6% लैके टॉप किया। तो मैं चाहूँगा कि ये जिहड़ी ये प्रॉपर्टी है, ये ट्रडिशन जिहड़ी है वो अगे भी जिहड़ी है वो कंटिन्यू रहे। ये सारा कुछ तद हो सकूगा जे पेरेंट्स जिहड़े ने वो सहयोग करन। हर बच्चे का ध्यान रखना पऊगा, सिर्फ टॉपर का नहीं, पर जिहड़े थल्ले दे ने बच्चे उन्हां दा भी टीचर ध्यान रखन। पेरेंट्स भी जिहड़ा कि उन्होंने सहयोग करन, वो अपने बच्चों का बच्चों पूरा टाइम देन। एक दिन भी नहीं, मैं बाहर अजे खलोता सीगा तो मैनू पेरेंट्स कुछ मिले कि तुसीं प्रोग्राम जिहड़ा है वो रात को कीता, लेट हो जाएंगे। तो समा कढ़ना चाहिए बच्चों लिए। जे साल च एक दिन भी आप 2 घंटे बच्चों की परफॉर्मेंस देखने लिए नहीं टाइम कढ़ सकते तो मुश्किल है। ये बच्चों ने जिहड़ा है 21वीं सदी के हानी बनना है। इन्होंने संसार के लोगों के नाल मुकाबला करना है, उत्थों के यूथ नाल मुकाबला करना है। तो वो तद ही कर पाउणगे जे इन्हां च वो गुण जिहड़े ने वो भरे जाणगे, वो गुण ग्रहण करनगे, तद ही ये मतलब उन्हां दा मुकाबला कर सकणगे। तो मैनूं पूर्ण आस है कि पेरेंट्स टीचर ये मिल के इस स्कूल की जिहड़ी है, जो ये स्कूल के फाउंडर पंथ रतन डॉक्टर इंद्रजीत सिंह का सुपना है, इन्हूं दोवें जाने रल के मिल के वो सुपने नूं साकार करनगे ते आने वाले समय जिहड़ा कौम का भविख है उन्होंने उज्जवल बनाउणगे। तो मैं इहो ही आस करदा होया तुहाडे तो क्षमा चाहुंदा हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Thank you, sir. Thank you so much. 97% marks in class +2 non-medical stream. She got 100 on 100 in math subject. Give her a big round of applause, please. Now she is here to receive Panth Ratan Trophy. Give her a big round of applause, parents. The next on list is Gurkaval Kaur, who stood first in medical stream with 85% marks. Sir, excuse me, sir. Sir, इधर एक करना। हाँ जी सर। Yes, parents, the thunder of applause should not be stopped. I repeat, Gurkaval Kaur stood first in medical stream with 85% marks. Let the clap go on, parents. The next on list is मैम सामने देखिए प्लीज। सर इधर देखिए। Gurkaval Kaur. She stood first in the medical stream with 85% marks. Next on list is Simar Kaur. She topped in commerce stream with 92.2% marks. Congratulations. You are a proud for Guru Nanak Foundation Public School. Yes, ma'am. Kindly keep on clapping. It's the time to motivate our children, parents. Next on list is Babita. She topped in art stream. I repeat, Babita, in art stream.
Another feather in the cap, Jagdeep Singh, who achieved 96.4% मैम ना लो marks. जो प्लीज इधर देखियो सामने वेट करना जी With a good round of applause, parents. Let's motivate them. They had done excellent in their stream. Mr. Jagdeep Singh, who achieved 96% marks in class 10. He got 100 out of 100 in SSTs. सर Give them a big round of applause. मैम सामने मैम इधर देखियो प्लीज Now it is the time to award achievers of sports. Next on list is Jasleen Kaur, class 12. She won bronze medal in National North Zone Championship. Held at Sangrur. Yes, we have her mother to receive the award. Yes, parents, kindly give them a big round of applause. मेरे सामने हो गए Let the thunder not stop. The next one is Harmanjot Singh of class 12, who won a gold medal at district level hammer throw. I repeat, Harmanjot Singh of class 12. He won a gold medal at district level, hammer throw. Congratulations, you have brought honor to Guru Nanak Foundation Public मैम ना School. लो जो इधर देखियो सामने वेट करना जी Next on list is Sujit Kumar of class 12. He won a gold medal in boxing at district level. देखो Please give a big round Ma'am, of now- applause, parents. एक्सक्यूज मी इधर सामने हाँ जी Now I would request our director sir Sardar Pratap Singh ji and our worthy principal ma'am Mrs. Poonam Sharma ji to kindly honor Pawar ji for being here and honoring our event. So please accept this token of love. हाँ जी सर सामने ये वेट करना Now I would request our worthy principal ma'am Mrs. Poonam Sharma ji to honor our director sir Sardar Pratap Singh ji. Now I request Mrs. Poonam Sharma ji and Pratap sir ji to honor Manjeet sir. He is the zonal secretary Guru Gobind Singh Study Circle. Thank you sir for being here. Thank you for the presence. Now I request our worthy principal ma'am Mrs. Poonam Sharma ji to honor Renu Hanspal ji, Guru Nanak Foundation Public School Principal Patiala. Chalo, I hope when I come, you will also honor me. Come on. Thank you ma'am, thank you for being Now kindly here. accept this token of love. We really admire you. You have spared your precious यस मैम विकेट Yes parents, please सर थोड़ा give a thunder round of applause to them. Now I would request Principal Ma'am Mrs. Poonam Sharma ji to honor our Director Sir Sardar Pratap Singh ji. Your presence indeed sir motivate all of us. The wisdom words that you have shared, we would really get benefit out of it. सर सामने उनको फिर भिजवा देंगे Now may I request ट्रॉफी भिजवा देंगे मैं मिलती हूँ मैं जाऊँगी।
Now we would like to address, to honor our Dr. Ashish sir जिन्होंने सारे प्रोग्राम अपने डायरेक्टर and Dr. Sonia. Thank you, sir. Your contribution to Guru Nanak Foundation Public Schools event is really commendable. Yes, sir. खुशियां
the Almighty God for making today's event a resounding success. First and foremost, we thank our honorable guest Chamalal Pawar ji